are welcome to Devendra Guru channels for SST. Actually, I would like to tell you why I want to say myself Guru. Actually, I have started this channel by taking inspiration of my spiritual Guru, and it is his inspiration only that to do something good for the nation and for the future of the nation, I thought to start to teach. And now, whenever I started, first of all, I remember that Guru. I would like to introduce also, but later I shall introduce my Guru. Who is my Guru? But one thing you keep in your mind, he is next to God. Who is he? Later we will discuss. Now here, today, yesterday one students demanded to discuss the French Revolution. My dear, I would like to say you, the French Revolution, it is the landmark event of the world history. This revolution changed the whole world. It affected the whole world. It changed the society. It changed the politics. It changed the economic system of the world. So it is so important event of the world history. First of all, when did the French Revolution take place? When did the French Revolution take place? The French Revolution took place on 14th July 1789. This French Revolution took place on 14th July 1789. Now, the question may arise in your mind, why it happened and how it happened? Why the people became angry? Why people became revolutionaries? Why people started to resist? Resist means oppose. To understand these all the situations which led to the French Revolution, we will discuss the events which were taking place in France before 1789 and after 1789. But let us start what happened on 14th July 1789. What happened on 14th July 1789? On the morning of 14th July 1789, the city of the Paris, it is the capital city of France. Where is the capital of France? Paris. Paris is the capital of France. The capital city was in turmoil. Why it is the condition of the city was in turmoil? Because the king had commanded the troops to move into the city. And a rumor has spread that the very soon king will order the troops to open fire upon the innocent citizens. A rumor is spread. Actually, it happens in our daily life also. Whenever the police force gathered at one place, then we started to feel why the police forces have been come here. People start to discuss it. आप समझ सकते हो कि अगर आपके गांव में अचानक से बहुत बड़ी पुलिस का एक दल जुट जाए तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज गांव में पुलिस क्यों आई है। ऐसा ही हुआ है फ्रांस के पेरिस में 14th July 1789. The streets of the Paris was full of the policemen. Everywhere there were the policemen. To see them, people started to discuss themselves why the policemen are moving. And some people said that they have come here to kill the people. And a rumor is spread. Rumor means afwa. Jhutti khabar, false news are spread everywhere. So my dear, one thing I would like to suggest you, don't pay attention on the rumors, because this rumor
may lead to something bad. First of all, we should try to understand the realities. Then after we should give any reactions. अफवाह ने इस रिवॉल्यूशन को जन्म दे दिया. क्या था अफवाह? The king would order the troops to open fire upon the citizens. Near 7,000 men and women. After listening this, after getting this news, after getting this rumors, 7,000 men and women gathered near the town hall. Gathered near the town. What would you do? यदि आपको पता लगे कि someone has come to kill you, or government has ordered the troops to kill the whole people, what would you do? The people would surely try to save their life. So what happened? 7,000 men and women gathered near the town hall, and they decided to form the people militia. A people militia was formed. People gathered there with their traditional arms, that's where maybe swords and लाठी डंडा जो हमारे यहाँ होता है, घरेलू हथियारों के साथ लोग जुट गए. Near about a group of 100 people moved towards the eastern part of the city. A group of 100 people moved towards the eastern part of the city, where a fortress prison, Bastille, was situated. What was Bastille? Bastille was a fort earlier, and now it was turned into the prison, and where those people were kept as the prisoners who were not following the order of the king. Those who were opposing the kings. Many prisoners, but here there were only 7 prisoners in that fortress prison, and that prison was hated by all. One question here always asked, why the Bastille was hated by all? Why the Bastille was hated by all? The Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. Despotic means निरंकुश. क्या कहते हैं? निरंकुश means unlimited powers. ठीक है? यह राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, जिसके कारण से पूरे फ्रांस के लोग, पेरिस के लोग बेस्टाइल से घृणा करते थे. Once again you keep this question in your mind, why Bastille was hated by all? The Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. यह राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, इसलिए लोग इससे घृणा करते थे. What happened here? When the people, a group of people moved towards the eastern part of city, they reached to the Bastille in hope to having hoarded ammunitions, arms, because people were searching arms to fight with the troops, and they had hope that in the fort there may be some hoarded ammunition, hoarded arms. They attacked on the Bastille. The fight which took place, in that the commander of the Bastille was killed, and all the prisoners, though there were only 7 prisoners, were released. जितने उसमें कैदी थे सबको भगा दिया गया, और जो कमांडर था उसे मार दिया गया. Bastille was demolished. Bastille was demolished. Means its bricks were broken down, and its stones were broken down, and bricks and stones were sold in the market to those who want to keep it as a memory. As a memory. इस तरह से बेस्टाइल का विनाश हुआ. और क्वेश्चन आता है यहाँ पर, explain the storming of Bastille. Explain the storming of Bastille. यानी बेस्टाइल के विनाश के बारे में बताएं. तो आपको फिर से एक बार हम बता दें आप ही की भाषा में कि बेस्टाइल का विनाश कैसे हुआ. बेस्टाइल एक किला नुमा जेल था. जब 14 जुलाई 1789 को शहर में स्थिति भयावह बनी हुई थी, लोगों में अफवाह फैले, लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक
जन सेना बना लेते हैं। जन सेना बनाने के तो बाद लोगों को हथियार की आवश्यकता महसूस हुई, तो लोग हथियार की खोज में सरकारी भवनों पर आक्रमण करना शुरू कर दिए। उसी में बेस्टाइल भी एक बहुत बड़ा सरकारी भवन तब्दील था, इसमें किला था, जेल था। लोगों को महसूस हुआ कि उसमें बहुत सारा हथियार होगा, राजा के द्वारा छुपा कर रखा गया हथियार। अगर आपको गढ़वा में कोई घटना हो जाए, मान लो ऐसा नहीं होना चाहिए, पुलिस पब्लिक में लड़ाई हो जाए, क्या हो जाए, पुलिस पब्लिक में लड़ाई हो जाए, जैसा कि अभी होते रह रहा है। फिलहाल भी आप लोगों ने देखा है, गढ़वा में हुआ है कहीं। तो पुलिस पब्लिक में लड़ाई हो जाए और पुलिस पब्लिक को पुलिस पर से विश्वास खत्म हो जाए, क्या हो जाए, खत्म हो जाए। पुलिस पर हमें विश्वास है कि पुलिस मेंस आर हियर टू प्रोटेक्ट अस, टू गिव अस प्रोटेक्शन, और whenever you will understand that policemen are our enemies, they are here to kill us, what would you do? यदि आपको ऐसा महसूस हो जाए कि पुलिसमैन हमारे दुश्मन है और हमें मारने के लिए यहाँ है, तो आप क्या करेंगे? आप उनसे साथ लड़ेंगे, अपना जान दे देंगे, लड़ेंगे। तो अगर लोगों को जब पुलिस पब्लिक की लड़ाई हो जाए तो लोग हथियार तो नहीं रखते हैं, हथियार तो सरकार के पास है। तो सिमिलरली लोग कहाँ हथियार खोजने जाएंगे? थाने पर, पुलिस ऑफिस पर, जेल में, एसपी ऑफिस पे लोग हमला करें और वहां से हथियार। वैसे जैसे कि यहाँ हुआ, ये फ्रांस की घटना है। कहाँ घटना है? फ्रांस की घटना है। ये घटना फ्रांस की है, जहां पर लोगों में जब अविश्वास फैला, किसके प्रति? राजा के प्रति, राजा की पुलिस के प्रति, तो लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और इस तरह से जब वो बेस्टाइल पर हमला करते हैं, बेस्टाइल एक किला जेल था, और बेस्टाइल के ईंट को गिरा देते हैं। उसकी सुरक्षा में लगे जितने भी सुरक्षा कर्मी थे उस सबको मार गिराते हैं। उसमें कैद किए गए जितने भी कैदी थे, यद्यपि उसमें कितने कैदी थे, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी प्रिजनर्स वर देयर इन द बेस्टाइल्स? 7। कितने प्रिजनर्स थे? 7। दे वर रिलीज्ड, उन्हें भगा दिया गया। आफ्टर दिस, ये घटना तो खत्म होती है। The impact of this incident was greater in countryside. This incident took place where? In Paris. कहाँ होता है? कैपिटल सिटी में। लेकिन इसकी पूरा इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? होल फ्रेंच टेरिटोरीज, पूरे फ्रांस के एरिया में पड़ जाती है। इन कंट्री साइड फॉलोइंग दिस डेज सेवरल राइट्स टुक प्लेस। राइट्स समझते हो? RIOTS, RIOTS means here it is violent conflict, right? It is a violent conflict, violent and हिंसक लड़ाई। क्या कहते हैं? हिंसक लड़ाई। अब हिंसक लड़ाइयां शुरू हो गई। And what was the reason for this riot? The reason for this riot was high prices of bread. In countryside, people were protesting the government due to the high prices of bread. A lot of people were suffering from the hunger. They were unable to purchase the bread due to the high price. अब ग्रामीण क्षेत्रों में विवाद फैल गई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग परेशान थे महंगाई से। किससे परेशान थे? महंगाई से। महंगाई इतनी बढ़ी थी कि लोग ब्रेड खरीदने में सक्षम नहीं थे। अब वे लोग, जैसे कि आपको आगे हम बताएंगे, कि ब्रेड से ही यह क्रांति हुआ। इस क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? ब्रेड से। क्योंकि जब महिलाओं का एक समूह ब्रेड की दुकान पर ब्रेड खरीदने के लिए खड़ी थी और अचानक से ब्रेड बेचने वाले शॉपकीपर ने कह दिया कि मेरे पास ब्रेड अब नहीं है, वो महंगा दाम पर बेच रहे थे। वो महिलाएं जिनके बच्चे घरों में भूखे थे और वह सुबह से लाइन में खड़ी थी ब्रेड खरीदने के लिए, और अचानक से दुकान की शटर गिरा दी जाती है कि अब ब्रेड नहीं है। अब वो घर जाकर अपने बच्चों को क्या खिलाती? वो गुस्साई हुई महिलाएं दुकान की शटर को तोड़ डालती हैं और दुकान के मालिक को मार डालती हैं और उसकी दुकान में रखे हुए सारे ब्रेड्स को लूटकर चली जाती। इट वाज द स्टार्टिंग, यही घटना का स्टार्टिंग था। और यहीं से पूरे पेरिस में, पूरे फ्रांस में लोगों ने लूटपाट करना शुरू कर दिया। उसी के रिएक्शन में यह घटना हुआ। 14 जुलाई को आप पूछ सकते हैं कि राजा ने व्हाई द किंग हैड ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। 14 जुलाई को राजा ने सैनिकों को शहर में घूमने के लिए आदेश क्यों दिया था? क्योंकि अब चारों तरफ विवाद हो रहे थे, लोग दुकानों को लूट रहे थे। तो जो पूरे शहर में टर्मोइल, अस्त व्यस्त स्थिति बनी हुई थी,
तो उसको रोकने के लिए भेजा था, न कि राजा ने जनता पर गोली चलाने के लिए भेजा था। बट the king had sent the troop to maintain the law in order and to establish peace. राजा ने सिपाही भेजा था लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए। लेकिन लोगों में भ्रम क्या फैल गए? क्या भ्रम फैला? व्हाट रूमर स्प्रेड दैट द ट्रूप्स हैव कम टू किल अस, टू शूट अस। लोगों, चूंकि लोग तो लूटपाट किए ही थे। अभी कुछ दिन पहले आपको भारत में, आप देखिए होंगे, आपको एग्जाम्पल से बता रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने भारतीय सेना की नौकरी को लेकर कुछ बदलाव किया। अब सेना में 4 साल की बहाली की बात हुई। अग्निवीर के नाम से एक हमारी स्कीम आया। उस स्कीम को लेकर देश भर में लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़े हुए। कई जगह पर रेलवे को डिस्टर्ब किया गया, जो कि उचित नहीं है। हमें विरोध करने का यह हिंसक तरीका कभी अपनाना नहीं चाहिए। विरोध करें, लेकिन प्रजातांत्रिक तरीके से करना चाहिए। विरोध कैसे करना चाहिए? प्रजातांत्रिक तरीके से। हम गांधी के देश के हैं और हम अहिंसा के पुजारी हैं। कभी हिंसा के लिए आपको अग्रसर नहीं होना चाहिए। आप विरोध करें। आप उस गांधी के देश के हैं जो अकेला व्यक्ति साउथ अफ्रीका में व्हाइट लोगों के साथ लड़ लिया। अकेला व्यक्ति पूरे भारत से उतनी बड़ी साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया बिना हिंसा किए। तो फिर हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भी लोगों ने हिंसा किया। हिंसा का परिणाम क्या हुआ है आज आपको हम बता दें कि लगभग हजारों जो अभ्यर्थी थे, जो आज नौकरी के लिए फॉर्म भरते, आज उन पर केस हो चुकी है और वो जेल के अंदर है, क्योंकि उन्होंने गलत रास्ता अख्तियार किया था। वही चीज अभी फ्रांस की घटना से हम भारत को जोड़कर बताना चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये सब क्यों हो रहा था, समाज में इतनी असमानताएं क्यों थी। तो इसको जानने के लिए समाज में कुछ लोग ऐसे क्यों थे जिनके पास रोटी खरीदने का भी पैसा नहीं था। ऐसी स्थिति क्यों बनी थी? महंगाई क्यों बढ़ रहा था? इसके पीछे की कारण क्या थे? To know this thing, we will have to discuss the French society before 1789. The period before 1789 in France is known as the old regime. 1789 से पहले की जो समय था, जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो सोसाइटी था, known as the old regime. क्वेश्चन होता है, what do you mean by the term old regime? So the old regime means society and institution before 1789 in France. Society and institutions before 1789 in France termed as the old regime. Is it clear? We discussed about the Bastille and the starting of this French Revolution. Especially, I introduced you the periods, the day of 14th July 1789. 2 questions you will remember from this topic. One, what happened on the morning of 14th July 1789? And another question, explain the storming of Bastille. And one more question, short questions, when did the French Revolution take place? Next questions, what was the old regime? What do you understand by the term old regime? Only this much questions may be asked from this topic. Questions may be asked, how many prisoners were there in the Bastille? Why the Bastille was hated by all? These 3-4 questions, my dear, note down the questions. These are the important. First question, when did the French Revolution take place? Second question, why was the Bastille hated by all? Explain the storming of Bastille. What do you mean by the term old regime? How many prisoners were there in the Bastille? These are the questions, important questions, and among them the most important question is explain the storming of Bastille. Thanks for today. Tomorrow we will discuss, in next video only, we will discuss the French society during the late 18th century. How the society was structured. That is very important. As there is less thing I would like to tell you. The society was divided into 3 groups.
It was known as the state system, first state, second state and third state. Thanks. In next video, we will discuss through it. Have a nice day.